Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is phraseology. Phraseology is a branch of lexicology. It studies fixed expression. We are going to discuss what are fixed expressions and how are they included into a language and the origin of phraseological units. So when we discuss phraseology, we are actually working with words. Okay, before we begin, let us look at some of these word groups. Bear the palm. Bear the palm means to win, to feel under the weather. It means to feel sick, to cast pearls before a swine, जिसको हम उर्दू में कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज भैंस के आगे बीन बजाई जाए, जैसे ये तस्वीर में नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाने से उसको समझ नहीं आएगी, ऐसे ही सिचुएशन। To say or to do something before someone who cannot understand. Similarly, we have such fixed expressions in Urdu. पाई पाई का हिसाब लेना, कोड़ी कोड़ी को मोहताज होना. In linguistic, phraseology is the study of set or fixed expression. तो इस तरह के, जैसे ये उर्दू के लिखे हुए हैं हमने या इंग्लिश के, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को जो डोमेन स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं phraseology. Phraseology is reflects study of phraseology reflects culture, history and vision. Phraseology reflects vision, history, customs and tradition. जैसे मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, जेब में नहीं धेला कर दी मेला मेला. और ये सेट एक्सप्रेशन इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी. These fixed expressions can be formal and informal. Just a few examples. टोपी ड्रामा. अब ऐसा ड्रामा जिसमें टोपी होती है, क्या इसका मतलब यही है? भाई ऐसा ड्रामा जिसके अंदर एक टोपी होती है, क्या इसका मतलब? नो, इट हैज फिक्स्ड मीनिंग. मत मारी गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मत को मार दिया गया. हर रीजन was killed, her mind was killed. It does not mean मट्टी पाओ. Let it go, इसका मतलब ये है, ना कि मट्टी डालना. तो ये कन्वेंशनलाइज्ड मीनिंग होते हैं, फिक्स्ड मीनिंग होते हैं. ऐसी की तैसी करना. A meaning expression used to portray anger, contempt, jealousy, and just a little grudge, just like the English sentence, they are gonna pay for this. So phraseology reflects customs, traditions of people. It is because phraseology deals with word groups having conventionalized meaning. Phraseology forms a special subsystem in the vocabulary system in which units are called differently by different linguists. There can be such terms as phraseological units, phraseologism. तो phraseology के अंदर phraseological units पढ़ते हैं हम. Phraseological units की दो किस्में हैं. There are two types of phraseological systems, phraseological units: motivated, non-motivated word groups. Motivated word groups are those word groups their meanings can be deduced from the constituent words. कि जिन अल्फाज से मिलके वो बन रहा है वर्ड ग्रुप, उनके मीनिंग उन अल्फाज से जाहिर हो रहे हैं. जैसे ए रेड रोज, ए स्मॉल गर्ल, टू टीच ए लेसन. नाउ वी कैन डिड्यूस मीनिंग from the constituent words. Non-motivated word groups is the opposite. If the combined lexical meaning of the whole word groups cannot be deduced from the lexical meaning of its constituent, such as word groups are considered lexically or semantically non-motivated. Red tape,
अब रेड टेप का मतलब रेड टेप नहीं है, बल्कि इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लंबे लंबे तरीके होते हैं काम के, उनको हम ब्यूरोक्रेटिक मेथड्स कहते हैं या रेड टेप कहते हैं। जैसे अब ये बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इज वन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनलाइज्ड सॉरी नॉन मोटिवेटेड वर्ड ग्रुप्स। आर वी ऑन द सेम पेज? अब इस पूरे के पूरे फ्रेजियोलॉजिकल यूनिट्स का कलेक्टिव मीनिंग बनता है। क्या मीनिंग है इसका? आर वी ऑन द सेम पेज? You must have heard from the politician saying we are on the same page. Military and the politicians are on the same page. What does it mean? On the same page का मतलब ये नहीं है कि लोग एक सर पे खड़े हैं, बल्कि वो एक जैसा सोचते हैं। ये these are some other examples of convention of phraseological units, non-motivated phraseological units, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है नॉन मोटिवेटेड फ्रेजियोलॉजिकल यूनिट्स की, जिसको हम कहते हैं डच ऑक्शन। Dutch is related to Netherlands, and auction means a public sale in which goods are sold to the highest bidder. But its meaning is not a sale in the Netherlands, where goods are sold to the highest bidder. Instead, the phrase has a conventionalized meaning referring to any auction where instead of rising, the prices fall. एक बोली जब नीलामी होती है तो उसके अंदर बोली बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्शन। तो हाईएस्ट बिडर को, सबसे बड़ी बोली देने वालों को दे दी जाती चीज। लेकिन यहां पर डच सेल के अंदर, डच ऑक्शन के अंदर प्राइसेस फॉल करते हैं। डच ऑक्शन मिसाल के तौर पर, here I am selling a tulip anyone for $100,000. No, and thus you see the price is falling down for $20,000. A phraseological unit is usually defined as a ready-made and idiomatic unit of the language built up according to the model of free word groups or sentences in case of proverbs and saying, and semantically and syntactically brought into correlation with them. Hence, it is necessary to name the criteria exposing the degree of similarity difference between phraseology. ये देखें, ये अब आपको फर्क बताया गया है फ्री वर्ड ग्रुप का और phraseological units का। Free word groups are formed in the process of speech according to the standards of language. Phraseological units exist in the language side by side with other stand-alone words. Free word groups are constructed in the process of communication by joining together words into phrase. And phraseological units are reproduced in speech as ready-made units